Yes guys, let's start. So I hope you got the explanation. यहाँ पर जितना समझाया मैंने आप लोगों को, I hope you guys got that explanation. Is it clear? Can you guys see my screen? Can you hear me? Yes. Yes, it's audible. Yeah, we can. Okay. And I hope you understood जो यहाँ पर मैं explain कर रहा था, right? इसमें थोड़ा सा और ये है detail है, complex है. So let's start doing that. Example, this is my data center. And understand guys, now we are discussing high availability within a data center. So if a data center goes down, then this solution which we are giving, it is not being applied. I mean, this is useless then. पूरा data center down होता है किसी reason से, then it is not helping us. ठीक है? And if someone says कि यार नहीं मेरा इतना critical application है कि data center down होने पे भी मुझको चाहिए, then you can, which one would you select then? Which one will you suggest? Availability zone. Right. And someone says कि यार पूरा region down होने पे भी चाहिए. So do you think we have anything for that? कोई रीजन है जिसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन है, बट फॉर सम रीजन जैसा भी यूक्रेन वगैरह में हो रहा है, फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीजन कि वो पूरा रीजन ही डाउन है फॉर सम रीजन. सो डू यू थिंक वी हैव समथिंग जहां पर उससे भी ज्यादा एचए मिले, हम लोगों को हाई अवेलेबिलिटी मिले, कि पूरा रीजन डाउन होने के बाद भी कुछ मिलता है? इज इट पॉसिबल? Region pairing or some other solution. Yes, there is something. What is it? We'll see that in detail. Don't worry. But yes, there is something. Just wanted to see you आप कितना ये कर रहे हो. See, there is something. We can have the high availability across the region also. We'll discuss that later. But so this is my data center. It has on this doesn't have availability zone feature, which means it has only one zone. It doesn't have multiple zones. And a data center will always have racks. So let's say I have rack 1, rack 2, rack 3, 4, 5. Do not judge anything with the size. Okay guys, just it is happening. ऐसे कुछ नहीं है, कोई बड़ा छोटा ये नहीं है, कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, वो वैसे ही बन रहा है बस. So these many racks I have. Example, नॉर्मली एक डेटा सेंटर में 1000 रैक्स होते हैं आराम से. अज्योर के डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एग्जांपल के लिए हम इतने ही लेंगे, दैट इज इनफ. एनीवन हैज एनी क्वेश्चन गाइस? So let's say I have sorry 8 racks, and now what did we learn? That we could divide them. Numbers वगैरह पे बाद में आते हैं. I'm explaining the same thing which I did on that picture, so you understand it well. उसके बाद exact numbers इसको हम देखते हैं. So first let's say I have bunched these 4, ये 4 जो है इनको मैंने एक बंच में ही कर दिया है, ये 4 रैक को. These 4 racks, it is in one set, and this is in one set, and this is in one set. So how many sets do I have here total? 3. Now we are reading fault domain guys. Okay, we are discussing fault domain. And how could I have, how many maximum I can have for fault domain? Have I shared that information? How many domains can I have, maximum fault domains? Three. Yes, 3. I am just seeing, I'm just trying to check if I have that information, but that's fine. Yes, 3 maximum fault domain we could have. The number is 3. Okay. What is update domain and maximum number of update domain? We'll see after this. So maximum we could have 3 fault domain. Now
let's say that we have received some power supply from here. It is Tata. Okay. Power supply and ISP both from Tata. Then I have one from government. Could be MSCB and BSNL वगैरह कुछ भी हो सकता है. But let's say it is from our Maharashtra government or any government, let's say. दोनों भी हमने वहां से लिए. And the third one we have taken from Airtel. So again, I know Airtel का कोई power supply नहीं है, but still this is just for the example. Airtel से हमने यहाँ पर power supply और ये दोनों ले रखा है. So now if I have an application which is very crucial, what will I do here? It's this is complete set guys. ठीक है, इसको अलग अलग मत देखो. ये नहीं होने वाला कि rack 1 में जाना चाहिए, rack 2 में. You cannot decide that in this feature. वो भी आप decide कर सकते हो, वो different feature होगा, वो हम अलग से पढ़ेंगे. In this feature you cannot decide rack. ये इतना डिजाइन बना के मैं इसलिए बता रहा हूँ, so you understand it well. What you can decide is your fault domain. Now I can give the numbers to this. This is my fault domain 1. जिससे मतलब हुआ ये जो 4 है 1 2 3 4. Fault domain है मेरा 1 which has my rack 1 2 3 and 4. Then I have my fault domain 2 which has 5 and 6. Then I have my fault domain 3 which has rack number 7 and 8. Not necessary equally rack होने चाहिए सब में. It is not at all necessary. You won't even come to know when you create a fault domain. Fault domain is a part of your job. It will be your responsibility. पीछे rack कितने attach हो रहे हैं, you won't even come to know that. You don't have to worry about it. This is just for the example purpose. I have given the names. ठीक है. So now my fault domain 1 has electricity and ISP from Tata to Airtel 3 government. Now a user comes and tells you that I have an application which requires 2 servers. That should be enough for my application to run 2 servers, but it is very crucial. I do not want downtime. बहुत ज़्यादा downtime I cannot afford. That is what a user says or a client says. But इतना भी crucial नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा charge कर दो. ये सब जो है probing होता है. I've shown you that on day 1 वो एक application questionnaires मैंने बताया था. Do you guys remember that? And it's there. If you want, you can always go and check here. ये OneNote मैंने आप लोगों के साथ share कर रखा है already. Here it is, sample assessment which I created. तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह का डाउन टाइम यू कैन अफोर्ड, किस तरह की रिडंडेंसी आर यू लुकिंग फॉर. इन दीज कॉल्स यू एक्सप्लेन इट टू यूजर कि इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, एंड देन which one would you like to go for this. Again, this is architect's job. You don't have to worry about it. आपके पास क्या आएगा पता है, सारा एक लास्ट में लो लेवल डायग्राम आएगा, सारा सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद. बट स्टिल यू नीड टू नो, ये प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए. then it will be easier for you to work. It will be easier for you to portray that you have already worked. It will be easier for you to crack an interview. Hence we are reading this, and people who are targeting architect वाला job उनके लिए ये जरूरी है. So you will be explaining this everything. Maybe आप लोगों को इसको cost estimation भी देना पड़ेगा, proof of concept भी देना पड़ेगा, how it works. वो सब होने के बाद he will agree whether he wants availability zone or availability set. That he will decide. आप लोगों को सिर्फ उसको बना कर देना है. So let's say that client has agreed on availability set. For some reason he thinks कि हाँ इतना मेरा requirement है, ये this is sufficient for me. So what will you do here? Now that application requires how many servers? 2 servers. A client say it's a 2 server application, that should be enough. And I want redundancy. You offered a method of availability set with 3 fault domains. It is not necessary to have all 3. You could do this with 2 also. Maximum is 3. You could do it with 2 also. ठीक है. Can you do it with 1? Does it make any sense if I say कि एक के साथ भी कर सकते हो? Is there any set? No. No. A set has to have 2 at least minimum. So it's 2 or 3. So now could any one of you tell me my application which requires 2 server to run that application, and I want this HA with 3 fault domains or 3 availability set. So how many servers do I require total?
6. Perfect, easy. So first server goes here in fault domain 1. Second server will go here, fault domain 2. Third server will come here. Same, fourth server will come here. Fifth will come here. Sixth will come here. बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम हो गए, ठीक है। इसके आगे जो फ्रंट लोड लगेगा, VMSS, वो सब will discuss that when we go to those topics. But now what do you have? You have 6 servers on different domains, different fault domains. सब पे डेटा वगैरह सिंक होता होगा, ये सब आप लोगों को वो हम बाद में देखेंगे। बट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी हम बोल रहे हैं इसका मतलब है कि डेटा वगैरह अपने आप सिंक होता होगा, मतलब जरूरी है। अदरवाइज डज इट मेक एनी सेंस कि इस पे जो है वो डेटा सिंक नहीं हो रहा है? इज इट हाई अवेलेबिलिटी इन एनी वे? इफ आई हैव एन एप्लीकेशन हियर, स्विगी के मैंने कार्ट में कोई ऑर्डर ऐड कर दिए थे 6-7 आइटम्स, एंड सडनली आई डिसाइडेड कि 2 गेस्ट कम आ रहे हैं, इसको मैंने 4 कर दिया, 6 की जगह मैंने 4 कर दिए, ठीक है, डिलीट कर दिए, एंड देन उतने में मेरा एप्लीकेशन डाउन हो गया। नाउ यूजर का सेशन रिफ्रेश हो गया है। व्हेन ही कम्स हियर उसको अपना कार्ट 0 दिखता है। आपका अकाउंट तो है, यू आर एबल टू कनेक्ट टू स्विगी, बट कार्ट में जो मैंने इतनी मेहनत से आइटम सेलेक्ट कर करके ये किए थे, डिस्काउंट वगैरह लगाया था, ये सब किया था, वो चला गया। ये मेरे साथ अगर 4 से 5 बार होता है, आई विल स्विच टू जोमेटो। I mean, I'm not talking about me personally. Tendency customers ki we are talking about. There's a survey. I'll share the link with you guys. But this is how it works. Are you guys getting it? You're planning to purchase an iPhone. You go to Amazon, Flipkart, दोनों पे exact सब कुछ सेम आप लोगों को डिस्काउंट वगैरह सब सही मिल रहा है। You simply went to Amazon. बड़ा नाम है, कुछ भी है, बट Amazon पे जाके आपके साथ बार बार ये हो रहा है, कभी एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, देन व्हेन यू कम बैक आपने जितना कलर चूज कर रखा था, वेरिएंट चूज कर रखा था, कुछ कूपन्स लगाए थे, यू आर देयर ऑन द पेमेंट पेज, वहां पर आप कुछ सेलेक्ट कर रहे थे, एवरीथिंग हैज गॉन। विल इट हेल्प यू? वुड यू लाइक दैट एप्लीकेशन? यू विल नॉट, राइट? तो वो सारी चीजें हर एक पे अप्लाई होती है कि ये सिंक होने ही चाहिए, इनका एक कॉमन एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज यूजर बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे। सो वो बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आई एक्सप्लेन इट दैट टाइम और अभी भी बता दिया। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन प्लीज आस्क, डू नॉट हेजिटेट। So now what is a fault domain? What is a fault? A fault is something which you do not plan, which occurs, an incident sort of. So what could be the fault? इतना जो एग्जांपल दिया है मैंने, ये पेज में जितना लिखा है, what could be the fault according to you? क्या लगता है आपको, what is a fault? Power failure or internet. Exactly, power failure और internet. So now I have this application जिसके 6 सर्वर है, सब कुछ डिवाइडेड है, और यहाँ पर जो है एयरटेल का और लेट्स से टाटा, अगेन टाटा का पावर फेलियर यहाँ पर हो जाता है। द मोमेंट टाटा का यहाँ पर पावर फेलियर हो जाता है, सो व्हाट डज इट मीन कि ये टाटा के पावर से जितने भी मेरे ये कनेक्टेड थे, ये अवेलेबिलिटी से ये सेट जो है ये कनेक्टेड था, इससे कनेक्टेड जितने भी रैक्स है ये सारे अपने आप डाउन हो जाएंगे, विच मीन्स कि इन पे से जहां पर भी मेरा एक सर्वर बना है वो अपने आप डाउन हो जाएगा, बट आई एम स्टिल गेटिंग माई सर्विसेज, माई एप्लीकेशन स्टिल रनिंग। हाउ? बिकॉज आई हैव एयरटेल का एक ये आईएसपी और पावर, एंड आई हैव गवर्नमेंट का एक आईएसपी एंड पावर, और इसको मैंने रिडंडेंसी में रखा था, मतलब इसके 2 सर्वर्स यहाँ पर है। लेट्स से फॉर सम रीजन टाटा के साथ साथ एयरटेल भी बंद हो गया, आई विल स्टिल बी एबल टू रन माई एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक थर्ड बैकअप है। So when you try to create a virtual machine, you will select 1 and 4. अब ये 1 और 4 ये किस रैक पे जाएगा, ये you don't decide that, and you don't even have to worry about it. इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, so you don't get confused. You select your availability set number. You select 1, 2, 3. और उसके अंदर किस रैक पे जा रहा है, you don't have to worry about it, because all racks, ये ऐसा नहीं होगा कि एक रैक लाइट जाने के जैसे एक रैक बंद हो गया। ठीक है गाइस, is it clear? Yes. Anyone has any doubt? Fault domain I'm just talking about. Update domain I did not discuss yet. Yes guys, किसी को कोई है डाउट, शक, confusion, question, anything? Yes, sir, but can you please explain it one more time? Sorry? Can you please explain it one more time? Sure. Anyone else? Guys, please ask, do not hesitate. Anyone else who did not understand? At least I need to know कि आप लोगों को पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, right? I am not asking कोई गूगल पे फीडबैक नहीं चाहिए मुझको आप लोगों का. I just want your feedback here. So for this batch, I could adopt that style which you guys understand. So are you guys getting it? Not getting it? Anything? Unless you speak, I will not understand.
What about others? Can anyone, if you guys are getting it, can anyone explain it to Akib? Who could explain it to Akib? Anyone who could explain it to Akib? Sonam, would you like to try? Or Yogesh? Or Yeah. maybe Tabrez? Basically, Anyone? Okay, Yogesh, you could give it. If you want, for you can share the your screen also. Do you want me to give access to share your screen? Yeah, I'm seeing the same picture which you are. Okay, you could use this and you could use annotations if you want. Yes, please start. I'm listening. Yeah, the fault domain basically has three parts wherein in a particular data center, uh, the if a customer has a server hosted, it's basically divided into three fault domain groups, and each one is over a different power line and internet line, so that if any one server goes down which is active, the site or the application will be carried out from the other two fault domain. If I'm not wrong. No, that's fine. It's correct. Akib, Vishal, what did you not understand from this one? Do you want me to explain it again? Did you get it? Did you not get it? the one which you showed with understanding, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the sequence which you told, which was hosted on the three fault domains, that part. Ye wala, this one? Yeah. That one, Okay. yeah. What about others? Yes, guys, any other question? Please ask. Do not hesitate. Ping me the question if you do not want to ask here. I've got already one request to repeat it. Akib has asked to repeat it. Anyone else? Okay. So Akib has a doubt in this one. That's completely fine, Akib, if you don't even understand this. Why? Because I told you ये जो racks है, आप लोगों को समझने की जरूरत भी नहीं है. I just wanted to show it to you guys, इसलिए इसको इतना explain किया. What are these? Did you guys understand? ये सब क्या है? ये क्या represent कर रहे हैं? ये जो columns जैसे खड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. What are It's these? rack. Rack. So when I say that I'm creating an availability set, इसका मतलब है मैं multiple racks को मिलाकर एक set बना रहा हूँ. The one which I shown here. तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे racks है. So let's say that this is rack 1 2 3 4 5 and 6 7 8 इसी तरह से. तो ये पूरे 12 रैक को मिलाकर मैं एक सेट बना रहा हूँ and I'm calling it availability set 1. इनको मिलाकर मैं बना रहा हूँ एक availability set, easy availability set. So और ऐसे ही इसके पीछे बना के मैं दूसरा सेट बना रहा हूँ, उसके पीछे तीसरा सेट बना रहा हूँ. And then when any server comes, one server will go here, the another one will go to another box, third one will go to another box. जो एक एक सेट में multiple racks हो गए. इनका पावर सप्लाई अलग होगा, इनका पावर सप्लाई अलग होगा, इनका पावर सप्लाई अलग होगा. Are you guys getting it? रैक का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर हार्डवेयर सर्वर्स रखे होते हैं जिसके ऊपर आपका वर्चुअल मशीन बनता है, जो आप यहाँ पर ये करते हो. Is it clear? Okay, भाई, did you get it? ये क्या है? 1 2 3 4 Yeah. कुछ नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि ये 4 रैक्स जो है इसको एक अवेलेबिलिटी सेट में ये कर रखा है. Yeah, understood. Thank you. Yes, Vishal, did you get it or do you still have some confusion? Anyone else? Guys, please ask. कोई हम लोगों को जल्दी नहीं है, एक और बार रिपीट करना हो तो we'll do that. Because if you don't understand this, आगे चीजें नहीं समझ में आएगी. Sonam, are you getting it? Miranda? Khalid, are you getting it? Yes. Okay. Ramesh, what about you? Are you getting it?
I think he slept. Okay. So I hope this is clear, guys, right? Fault domain तो हम ऐसे ही करते हैं, जो fault which is something which is not in our hand, which is not in our control, something as an incident. तो ये तो हुआ fault domain. दूसरा term क्या है वहां पर? Update domain. Now let's discuss what is update domain. Okay, the next one we have is update domain. Update और fault domain का मिलके एक set बनता है, understand that, ठीक है? और उस set में आपके ये होते हैं. Now update domain कैसे दिखेगा आप लोगों को? ये जो रैक्स है, इसको मैंने ऐसे तो एक सेट में डिवाइड कर दिया, एक सेट ऐसा भी डिवाइड कर रहा हूं मैं इसका. दिस इज सेट 1, दिस इज सेट 2, 3. डू यू वांट मी टू लेट मी क्रिएट अ न्यू डायग्राम? ज्यादा कंफ्यूजन. डेटा सेंटर, रैक्स, ठीक है. दिस इज आई एम डिवाइडिंग. ये जो डिवाइडेशन पहले बताया था मैंने आपको, दैट इज फॉल्ट डोमेन. और अपडेट डोमेन के डिवाइडेशन विल सी लाइक दिस. One, 2, 3. Maximum we can have 20. Update domains we can have 20. 4. Sorry, 5. ठीक है. Update domain we can have up to 20. और fault domain how many we can have maximum? 3. तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करना शुरू कर दूं तो कोई भी 3 हो जाएगा, सपोज कहीं से भी कोई भी 3. ठीक है. इवन इफ यू डोंट कंसिडर रैक्स, एक 1, 2 and 3. तो ये एक मेरा हो गया अवेलेबिलिटी सेट. ठीक है गाइस, दिस इज माय अवेलेबिलिटी सेट, Azure AV set 1. इसमें क्या आ गया? ये जो है इसके अपडेट डोमेन आ गए और ये फॉल्ट डोमेन आ गया. ये हुआ सेट 2 and this is set 3. Fault domain you guys understood very well, I hope. Yeah. Right. यहाँ पर जो ऐसा ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये आपका है अपडेट डोमेन. नाउ व्हाट इज एन अपडेट डोमेन? लेट मी क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज एन अपडेट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो अपडेट डोमेन क्या है. अभी हम लोगों ने बात की फॉल्ट की, जो अनप्लान्ड है, जो किसी भी तरह से हो सकता है, विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. But there is one more downtime which is in control and which we do intentionally. वो होता है अपडेट. किस चीज का अपडेट? आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ये जो हार्डवेयर लगा रखे है ना यहाँ पर, इनके ऊपर भी एक फर्मवेयर होता है, कुछ ना कुछ होता है जिसको बार बार हर महीने 2 महीने में एक बार अपडेट करना होता है और इन सबको रीस्टार्ट करना होता है. इन सबको रीस्टार्ट करना होता है. So let's say that if your machines, all virtual machines are here, 6 virtual machines you needed, right, for your application. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. पावर फेलियर वगैरह पे तो हमने डिवाइड कर दिया कि ठीक है, पावर फेलियर जब भी होगा, जितना भी होगा पावर फेलियर, मैक्सिमम इतने ही एरिया का होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको एक फॉल्ट डोमेन बना रखा है. ये हमारा स्टिल चालू रहेगा एरिया और ये एरिया स्टिल चालू रहेगा इसके बाद वाला. ठीक है. ये तो आपका फॉल्ट से बचने के लिए. बट व्हाट अबाउट अपडेट? इफ आई डू नॉट डिवाइड इट एंड व्हेन माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स देयर सर्वर्स, और ऐसा होता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लाइंडली सब कुछ डिवाइड कर, सब कुछ अपडेट कर दिया. लेट्स से दैट आई हैव माय एप्लीकेशन सर्वर. मेरा एप्लीकेशन सर्वर कहीं पर है, एक यहाँ पर है. लेट मी चेंज द कलर सो यू विल अंडरस्टैंड इट.
So my server is here, it is here, it is here, it is here, it is here, and it is here. तो इसमें मुझको ISP एंड पावर सप्लाई, इससे तो रिडंडेंसी मिल गई, बिकॉज अगर यहाँ का जाता है टाटा या एयरटेल का, आई हैव इट हियर, आई हैव इट हियर. बट व्हाट अबाउट अपडेट, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट अपडेट देयर हार्डवेयर, और तब उस वक्त अगर माइक्रोसॉफ्ट ने गलती से ये सारे रैक को एक साथ, फॉल्ट में तो ये अलग अलग डिवाइडेड है, राइट? टाटा की लाइट अगर जाती है यहाँ पर, तो ये अवेलेबिलिटी सेट रैक 3 और 4 इस तरफ ये फर्क पड़ने ही नहीं वाला है कुछ, राइट? इट डजंट मैटर. यहाँ पर जो 2 मशीनें चलती रहेगी, यहाँ पर जो 2 मशीनें वो चलती रहेगी, बिकॉज ये रैक्स अपने आप चल रहे हैं. बट व्हाट अबाउट अपडेट, जब माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करता है 100 मशीन्स को एक साथ, और उसमें गलती से मेरे वो सारे मशीन्स उसने वही रिबूट कर दिए, ये मशीन्स, ये हार्डवेयर, मे बी मेरे सर्वर्स कैसे थे, लेट्स से इफ आई ड्रॉ इट, कि मैंने यहाँ पर एक अलग अलग जोन अवेलेबिलिटी फॉल्ट डोमेन बना रखा है, अवेलेबिलिटी सेट में फॉल्ट डोमेन बना रखा है. 1 मशीन हियर, सेकंड मशीन हियर, थर्ड मशीन हियर, सबके लिए अलग अलग पावर सप्लाई है, सबके लिए अलग अलग इंटरनेट है. सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग टू थर्ड, माय सेकंड एंड फर्स्ट इज स्टिल वर्किंग. दिस इज अ फॉल्ट डोमेन. बट अपडेट डोमेन में क्या होता है ना, कि ठीक है ये रिडंडेंसी तो है मेरे पास, बट नाउ माइक्रोसॉफ्ट डिसाइडेड कि इन सबको मैं एक साथ अपडेट कर दूंगा और इन सबको एक साथ रिबूट कर दूंगा. तो क्या होगा, सेम टाइम पे ये भी रिबूट हो रहा है, सेम टाइम पे ये भी रिबूट हो रहा है, और सेम टाइम पे ये भी रिबूट हो रहा है. इससे क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन का डाउन टाइम कम होगा. सर्वर रिबूट होने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं टू इवेंचुअली वर्क एवरीथिंग करेक्ट, और वो सब होने के लिए. अपडेट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, किसी का फर्मवेयर अपग्रेड आया होगा, किसी का कुछ अपग्रेड आया होगा, ये सब हो जाता है. वंस डाउन इट गेट्स अपडेटेड कॉलम बाय कॉलम, राइट, सॉर्टेड, सॉर्ट ऑफ. सो आर यू गेटिंग इट गाइस? यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को? अगर ये अपडेट Yes. एक साथ हो जाए तो मेरी मशीन डाउन हो जाएगी, ठीक है, पावर सप्लाई है, सब कुछ है, बट ये मशीन ही अपने आप में रीस्टार्ट हो रही है, तब भी तो एप्लीकेशन डाउन होगा. सो टू अवॉइड दैट, व्हाट दे हैव डन, they have come up with this update domain also. So update domain में भी क्या होता है, Microsoft will make sure कि आपके सर्वर्स हमेशा इस तरह से अलग अपडेट डोमेन में हो कि वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करे ही ना. So with update domain what will happen, one server will here, another will be here. एक यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा. अब इससे क्या होगा कि पावर फेलियर वगैरह फॉल्ट डोमेन का तो मुझको ऑलरेडी रिडंडेंसी मिल चुकी है. कहां से मिली है, द मोमेंट आई डिवाइडेड दिस. अब अगर अपडेट डोमेन का भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट अगर इसको अपडेट करता भी है, ठीक है, ऐसे, तो ये 3 मेरे पास स्टिल अवेलेबल है, सर्विसेज मिल रही है. एंड बिफोर समवन आस्क कि अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन दोनों एक साथ अगर आ गए, मतलब सबकी इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई इनकी, और सबने ये भी कर रखा है, व्हाट डू यू से, अपडेट भी साथ में हो रहे हैं, then what will happen, so nothing will happen, तब आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी. to avoid this, तभी हमारे पास है अवेलेबिलिटी जोन. अवेलेबिलिटी सेट में दिस इज द मैक्सिमम वी कुड गिव, कि अपडेट होने पे भी आपका एप्लीकेशन नहीं जाएगा, फॉल्ट होने पे भी आपका एप्लीकेशन नहीं जाएगा. दोनों एक साथ अगर वैसे होता नहीं है कभी, बट लेट्स से कोई फॉल्ट वगैरह आ गया, अगर लाइक, और उसी टाइम पे हम अपना, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अपडेट भी जो है प्लान करके रखा है, मतलब बहुत रेयर कोइंसिडेंस ऐसा हो सकता है, but still होता है, तो then your application is down, nothing you cannot do anything about it, you'll have to work and get it back. Is it clear guys? Yes. So we have 8 minutes remaining. Let me see if I can cover. Do you want me to cover any topic, or it's too much for today? Be honest guys, just for the sake of it, course cover नहीं करना है हम लोगों को. And by the way, not all services are available. ठीक है, जोन में हर सर्विस नहीं मिलेगी, VM पे मिलती है कुछ सर्विसेज, इसमें नहीं मिलेगी. That list you can go through from here. और वो प्रैक्टिस के साथ हम लोग सीख भी जाएंगे. So we are pending with this, but I'll start with the storage. जब storage करेंगे तब, इसके पहले we'll move to portal now. Landing zone तो बहुत high level next topic है, policies वगैरह तो ठीक है. I think this page we are almost done with, unless you guys have some questions. Post this we are going to start Azure Compute. इसमें हम एक वर्चुअल मशीन बनाना स्टार्ट करेंगे, एंड उस वर्चुअल मशीन के हर कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं, और उसमें जो जो टॉपिक आता है उसको हम स्किप करेंगे, एंड विल डू दैट लेटर, because I do not want you guys to get confused. So let me show it to you. What I'm trying to say here is,
example, this is not my subscription by the way, जिसको access दिया था मैंने, please use it guys, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा and then we'll see for the new access. So what I was talking about is that we will create a machine first. उसके पहले obviously एक virtual network बनाना पड़ेगा, हम लोगों ने देखा है, so I will expect कि आप लोगों में से guys tomorrow we might skip the class, I'm traveling, I'll try to cover it up. If I reach there on time, I will have my laptop with me, we'll try to cover this class. If not, you will have enough time Friday, Saturday and Sunday guys. Please practice, please read about it. थोड़े heavy topic है, but if you not read it tomorrow, आप वैसे ही भूल जाओगे. So make sure you read it well. Okay, so I was saying कि we'll create a virtual machine. और ये जो लेफ्ट से एक एक ऑप्शन है ना, ओवरव्यू, इसको देखेंगे, एक्टिविटी लॉग इसको देखेंगे, देन कुछ को छोड़ते भी जाएंगे हम लोग, बिकॉज कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बड़े हैं जिसको हम बाद में कवर करने वाले हैं. एग्जांपल बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, जस्ट बिकॉज दे आर कमिंग हियर दैट डज नॉट मीन कि मैं उसको विद इन वर्चुअल मशीन कवर कर लूंगा. ठीक है, बैकअप हम अलग से पढ़ेंगे, डिजास्टर रिकवरी हम अलग से पढ़ेंगे. हाँ बट इसमें काफी टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर हुए. नेटवर्किंग वी हैव ऑलरेडी रेड, we'll see how to relate that networking concept, those concepts which we read, to our virtual machine. Disk we will read, size we will discuss, security we will discuss, advisory we will discuss, availability scale set, you see, fault domain and update domain, we have read it. We will do the practical of this. कैसे होता है configuration, basic चीज है, we'll see. Identity क्या होता है, we'll see. Properties we'll see. Lock क्या होता है, we'll see. Bastion. So we'll start from here, maybe from Friday or Monday guys. So now anyone has any question? Yes guys, कोई भी question नहीं किसी को? Anyone? If not, let me ask a question to you guys as we have 4 minutes. Let's see what is your understanding. I am using maximum capacity of availability set. What is the maximum capacity of availability set? Who could tell me how many update domains and how many fault domains? 3 fault domain and 20 update domain. 20 update domain. 20 update domains. So I am using my maximum capacity. The maximum capacity is fault domain 3 and update domain 100. Sorry, 20. Now I have 100 virtual machines. Who could tell me कि एक अपडेट डोमेन में कितने मशीन्स ये हो गए और एक फॉल्ट डोमेन में कितने मशीन्स हो गए? Like 100 VMs for the application, is it all required or it is? Yes, that is my requirement. 100 VMs are my requirement. Achha. And I'm using availability set. Total requirement is So- 100. So we'll be requiring 3 set of identical 100 servers, right? So 300. No, total 100. No, not 300. Total 100 Okay. servers. That's okay. किसी में एक में एक दो ज्यादा चले जाए, एक में कम हो जाए, that is fine. Take 33 for fault domain. 33. Sorry. server. How many will go to fault domain? एक fault domain में कितने होंगे? Fault domain 1, fault domain 2 and fault domain 3. So एक fault domain में कितने होंगे? 33, we can take 33. Right. I told you कि exact numbers not necessary. 34, 35, 33 जो भी होते हैं, let's say इस number के साथ हम जा रहे हैं. What about update domains? Update domain, we can take 5 servers into one update domain. 5 servers. Correct. Yeah. Are you guys getting it? कैसे हो रहा है ये? Are you guys getting it properly? Yes. Yes. As we have 2 more minutes, let me check. When you need 2 servers to run an application and one of which is in update domain, that is it getting updated, then how will your application work until then? Yes, it will definitely work. I explained at the beginning that if let's say only 2 servers model I have, okay? A simple one. This is very simple question, but quite interesting. So let's quickly. 2 servers I have.
दोनों अलग अलग फॉल्ट डोमेन, अलग अपडेट डोमेन में है, और लेट्स से अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, एंड व्हाटएवर इट इज, right? For any reason, your question is for any reason, one server is down. Maybe it is updating or it is down. It could be anything, right? So my one server is down. This is my server 1. This is server 2. So what I explained, that both of these servers, these will not be directly facing the public. Public facing will be some other device, कुछ छोटा device होगा, कोई भी feature होगा. In this case, let's say it's a load balancer. What will load balancer do is, load balancer यहाँ पर एक public IP रखेगा, public IP, जिससे सब लोग आपका एप्लीकेशन को सब ये यूज कर सके, ठीक है. And at the back of this load balancer will be connected to both machines, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. And the public, यहाँ पर जो आपकी यूजर है, they are targeting or they are hitting here. This session is about to finish, guys. Anyone has any other question, let me know. और यहाँ से इस load balancer में वो feature होता है that it will know कि if this is being updated, meanwhile सारी request इसको भेजो. If this is shut down, meanwhile सारी request इसको भेजो. That we will see how to configure that. If this is being overutilized, request इसको भेजो. और दोनों में sync वगैरह होगा, that I have been discussing. So this is about to finish, guys. If you have any questions, please ping me, call me, or whatever it is. I think we'll take a break tomorrow. Let's see how it goes. And if possible, I will let you know. I'll ping in the group. If taking the classes, I'll ping in the group. If no, there's no message, assume it is cancelled. Do a study. We'll see you on Monday then. Go through the availability zone and set and everything. We will start applying them from Monday. Okay, see you. Bye.